Guys, finally, this is my iPhone 12 and I'm going to share my review about experience of iOS 26. So, ये फ़ोन मैंने iOS 26 पर अपडेट करा है and first thing which I noticed immediately after updating the phone is the animations. They're just fantastic. Like they're just look at those animations. Aren't they cool? सीरियसली लाइक जो एनिमेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं. लाइक इवन जो स्क्रॉलिंग का जो स्मूथनेस है ये डेफिनेटली इम्प्रूव हो चुका है. लाइक ये तो 60 हर्ट्ज़ वाला फ़ोन है तब भी इसमें एनिमेशंस बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं. यू जस्ट लुक एट दोज एनिमेशंस, दे आर रियली ब्यूटीफुली फास्ट एंड आई एम एब्सोल्युटली फॉन्ड ऑफ दिस. और जो उन लोगों ने कुछ कुछ चेंजेस करे सच एज द फर्स्ट मेजर रीडिज़ाइन विच आई एक्चुअली अप्रिशिएट इज़ द कैमरा. This is a really good enhancement. Like seriously, this is the biggest camera overhaul we have seen in generations. Just look at this. इन लोगों ने इधर जो एनिमेशन है या फिर जो लेआउट है कैमरा का वो काफ़ी डिफरेंट करा है. जस्ट लुक एट दिस एनिमेशन, हाउ ब्यूटीफुल इज इट. एंड यू कैन क्लियरली सी वी हैव टू स्वाइप फ्रॉम हियर एंड यू कैन सी दिस ऑल लेआउट, exposure, filter, night mode settings, and we have to double tap on this night mode. So this enables night mode max, night mode auto. If we have to tap 2 times, then it launches the night mode app max, and we can access the same menu from here as well. So इधर से भी आप वो access कर सकते हो menu. And look at this animation. Like just take a look at it. लाइक रिफ्रैक्शन वो दिख रहा है गाइस, ये बहुत अच्छा एनिमेशन है. लाइक दिस इज़ रियली गुड एनिमेशन. लाइक मैंने ऐसा एनिमेशन और दूसरे फ़ोन में नहीं देखा है. और इधर से अब बहुत ही स्मूथ हो चुका है प्रोसेस. इधर से वी कैन एडजस्ट ऑल दोज फ्रेम रेट्स एंड रेजोल्यूशन. सो पहले काफ़ी बार हमको टैप करना होता था लाइक टू चेंज द रेजोल्यूशन, एंड दिस इज़ अ रियली वर्थ इम्प्रूवमेंट. लाइक just we have to just change the resolution from here. We can do anything we wish. एंड ये मुझे बहुत अच्छा और बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा. ये सेकेंड चेंज मुझे क्विकली पता चला, आपको सबको पता चल रहा होगा जिनने वो iOS 26 पे अपडेट करा है. यू कैन सी द अपडेट बार. एक्चुअली इट वॉज समवेयर ओवर हियर प्रीवियसली एंड दे हैव शिफ्टेड इट टू डाउन. लाइक बॉटम पे शिफ्ट करा इन लोगों ने. And you can clearly see, and this is way more handy. Like if you are using a phone by a single hand, this feels way more ergonomically better than before. And battery section भी इन लोगों ने change करा. You can clearly see this is a completely different layout of the battery, and it's actually really good. Like I am really fond of this. Other than that, there are no such major improvements they've done. Also in accessibility settings, you get a new option called as head tracking, and this is similar to eye tracking which was introduced in iOS 18. It works very similarly to it, and मुझे वो kind of ठीक लगा फीचर. मैंने तो यूज़ नहीं करा है, but also there is a new preview app. So if you have a MacBook, you can actually see all those files and documents which you have kept. So this is also a great feature which I like. Another thing which I loved about this is a separate gaming app. Like previously in iOS 18 there were cluttered of different kind of games. जितने भी जो Apple के गेम्स है आर्केड में वो सब different scattered थे, and this they have actually integrated into one single app which is the games app. And this is a really cool thing. Like all games we can just see from here. एक सेपरेट सेक्शन ही इन लोगों ने करा है. यू कैन क्लियर द एप्पल आर्केड. सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड इधर भी इन लोगों ने यू कैन सी दोज लिक्विड ग्लास एनिमेशंस, हाउ ब्यूटीफुल दे लुक. सीरियसली बहुत ही अच्छे दिखते हुए एनिमेशंस. अदर देन दैट एक और भी मेजर इम्प्रूवमेंट मुझे नोटिस है. इम्प्रूवमेंट या अपडेट में बोलूँगा उसको. दिस इज़ अ 3D वॉलपेपर विच दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इन iOS 26. So basically any photo you can convert into a 3D image, and this is available only iPhone 12 and above. iPhone 11 series doesn't support this feature, and
दिस इज़ रियली क्रेजी. जस्ट लुक एट दोस फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड सेपरेशन. बहुत अमेजिंग है, बहुत सही दिख रहा है. लाइक ये जो फीचर है मैं तो बहुत पसंद करता हूँ कि जो you can see we can actually stretch this till this, and actually this goes like behind the scene, like behind the subject, and this looks very cool. We can actually disable this simply from here, and it looks as simple as this. Plus now there are two sections called as glass and solid. So solid जो आपका normal जितने भी जो like colors जो थे like प्लेन होता है, जो ये जो सॉलिड सेक्शन होता है, दिस इज़ अ प्लेन एंड ग्लास इज न्यूली इंट्रोड्यूस. सो यू गेट दिस ग्लासी रिफ्लेक्शन इफेक्ट. इट लुक्स बेटर इन iOS 26 ओरिजिनल वॉलपेपर. आई विल शो यू द ओरिजिनल iOS 26 डिफॉल्ट वॉलपेपर, एंड यू कैन सी जो मैं ग्लास वाला इफेक्ट आपको बोल रहा था वो इधर आपको क्लियरली नोटिस हो रहा है. कैन यू सी दिस रिफ्रैक्ट, इट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस ग्लॉस. लाइक ये क्लियरली ग्लास जैसे रिफ्लेक्ट करता है. And in solid you don't get like this, it's plain flat look. See here, it doesn't reflect. And when I'm switching to glass, just look at it, it reflects the light. Take a look at it. This is impressive. like बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये. इससे भी बेटर तो एनिमेशन है अनलॉक का. जस्ट लुक एट दिस एनिमेशन, वाओ. जस्ट लुक एट दिस लिक्विड ग्लास इफेक्ट, कितना सही है यार ये. जस्ट लुक एट इट. It's really good. I loved it, seriously. So guys, मैंने जो आपको दिखाया बहुत ही बेसिक रिव्यू था iOS 26 का. जितना मैं लाइक जो रॉ नॉर्मल पीपल है उनको जो विजुअल डिफरेंसेस कितने नोटिस हो गए वो मैंने आपको सब बताए. एंड मैं तो एक चीज़ बोलूँगा कि दिस इज़ अ रियली गुड अपडेट, बट इट कम्स विद इट्स ओन ड्रॉबैक्स. द मेन ड्रॉबैक इज़ बैटरी लाइफ. बैटरी लाइफ पुराने आईफोन्स में एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है. लाइक मेरा जो है आईफोन 12 है, दिस इज़ आई हैव चेंज दिस बैटरी टू 100%. सो एब्सोल्युटली ओरिजिनल इसकी बैटरी है. यू कैन सी दिस इज़ अ ओरिजिनल एप्पल बैटरी. स्टिल मुझे आई हैव टू चार्ज इट एटलीस्ट 2 times a day इफ़ आई एम यूजिंग एट अ मीडियम. लाइक अगर मेरे मीडियम यूजेज है तो आई एम नॉट इवन प्लेइंग गेम्स लाइक COD और PUBG. सो अगर आप if you played those games, then this might last, you have to might charge it like 3 times a day easily. And this was not the case in iOS 18. iOS 18 में इसकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी. like easily it was giving you like a 5 to 6 hours of screen on time, but now it's not the case. So now let's hope that a future update which will be iOS 26.1 will fix this issue. like generally past records अगर अब एप्पल के देखें तो जितने भी जो 0.1 के अपडेट्स होते हैं उनमें वो ये सब जो मेन इश्यूज होते हैं वो फिक्स करते थे. लाइक इन iOS 18 ऑल्सो देयर वॉज अ इशू ऑफ दिस बैटरी लाइफ, एंड इट वॉज एक्चुअली चेंज इन लाइक इट वॉज इम्प्रूव्ड इन 18.1. सो नाउ लेट्स होप द सेम फ्रॉम 26. में भी एक सटल चेंज है कि अगर हमको इधर कन्वर्ट करना होता तो इधर लाइक आइकन होता था, बट नाउ यू गेट दिस डेडिकेटेड सेक्शन. यू कैन स्विच बिटवीन दोज वॉलपेपर, साइंटिफिक मैथ नोट्स एक्सेट्रा. सो दिस इज़ अ सटल चेंज विच आई जस्ट नोटिस. गाइज मैं भी लाइक सर्च ही कर रहा हूँ कि क्या क्या नए चीज़ें आए. जितने भी मुझे पता चलते हैं नए चीज़ें वो आपको बता दूंगा मैं. सो दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ टुडे. सो अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.